Now I discuss the new topic, theory of unsymmetrical bending. Before starting unsymmetrical bending, I just take simple theory of bending. उससे start उसमें हम समझना चाहिए कि simple theory symmetrical theory of bending क्या होती है. इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे पास simple theory of bending होती है. तो उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद हमारा बीम सेक्शन लिया है, उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला जनरली अप्लाई करते हैं सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग के लिए वो हमने यहाँ मेंशन किया, इसको फ्लेक्सुरल फॉर्मूला हम बोलते हैं. इफ द प्लेन ऑफ लोडिंग or plane of bending lies in any one plane of principal central axis, then the bending occurs in the member is generally known to be simple theory of bending or symmetrical bending. In this section, x-axis and y-axis are two principal central axes, and the plane of loading lies along the y-axis. That is why the bending occurs in this section is known to be symmetrical bending or simple theory of bending. The formula generally used for simple theory of bending: m upon I equals to f upon y equals to e upon r. M bending moment, I moment of inertia, f the bending stress, y central of distance, e modulus of elasticity for the material with beam and arc radius of curvature. Now सबसे पहले हमने देखा सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग क्या होता है. नाउ unsymmetrical bending, if this situation is not happen, then the situation is called unsymmetrical bending. कि अगर ऐसा कहीं लोडिंग का कंडीशन नहीं होता है कि प्लेन ऑफ लोडिंग और बेंडिंग किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर नहीं लगा होता है, एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, तो हम उसको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग बोलते हैं. यहाँ देख भी सकते हैं लोग. X-axis and Y-axis are two principal central axes, and the plane of loading or bending acting at an angle theta. In all the figures, you can say. Now the definition: if the plane of loading or bending does not lies or does not coincide with any one plane of principal central axis of the section, then the bending in the member is known as unsymmetrical theory of bending. फिगर में शो किया हुआ डायग्राम बताया है जो हमारे अनसिमेट्रिकल थ्योरी ऑफ बेंडिंग को शो कर रहा है.